Oxy. Oxy. हुन्छ ओइ बाई बुम दिल्ली हजुर थ्याङ्क यू ल बाई गए है चेकिङ गाइस चेकिङ हेलो नमस्ते होप यु गाइज आर फाइन हैन म पनि सन्चै छु म चाहिँ अहिले वेटिङ रुममा हो क्या चेकिङ भइरह वेटिङ रुममा अघि त त्यहाँ जुत्ता सुत्ता सब खोल्न लाउँदो रहेछ गाइस हजुरहरू पनि केही नलिराउनु होला यहाँ धेरै मान्छेहरू छ गाइस हामी चाहिँ वेटिङ रुममा छौँ खतरा छ तपाईँ फर्स्ट टाइम भएर है खतरा नर्भस फिल भइरहेछ तर केही छैन वी विल डु इट त्यहाँ अघि चाहिँ ठ्याक्कै बोर्डिङ पासहरू गर्दाखेरि त्यो एयर सुविधाको फर्म भर्नुपर्ने रहेछ अनलाइनबाट त्यो भरेँ यहाँ अब एउटा दाइलाई पनि भने अहिले चेकिङ भयो सबै ब्याग छ यो त सब ह्यान्ड ब्याग हो नि त त्यही भएर हातमै बोक्ने हो केही छैन दाइ त बसिराख्नु भएको रमाइलो छ सबैजना वेटिङमा हुनुहुन्छ अब हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ आज चाहिँ म कहाँ जानला भनेदेखि न्यू दिल्ली जानला हो एउटा केही काम छ त्यो काम हजुरलाई म पछि भन्ने छु त्यही हो धेरै पछि मैले आज भ्लग गरिरहेको छु होइन इट्स बिन लङ मोर देन 3 विक्स मैले भ्लग नगरेको अब हेरौँ के हुन्छ है त गाइस वेटिङमा धेरै भएको थियो क्या लगइन गर्न नपाएको थियो धेरै मुभमेन्ट थियो टेन्सन भरेर बसेको थियो त्यही भएर मैले 3 दिन मैले भ्लग नगरेको के 3 विक्स मैले भ्लग नगरेको हो आई होप अबदेखि चाहिँ कन्टिन्युस आउँछ कि होइन मेरो भ्लगमा चाहिँ फर्स्ट इन्टरनेसनल टुर है गाइज इन्टरनेसनल टुर हो नि फेरि नेसनल होइन नि यु क्यान सी द गाइज यो नेसनल एयरपोर्ट होइन इन्टरनेसनल हो इन्टरनेसनल फेरि बस होइन बस यु क्यान सी बस अघि त हामीलाई आउँदाखेरि जुत्ता सुत्ता एभ्रिथिङ खोल्ने रहेछ क्या जुत्ताहरू खोल्ने ब्यागहरू चेक गर्ने होइन सबै गर्दो रहेछ बेल्ट सेल घडी पर्स एभ्रिथिङ निकाल्दो रहेछ क्या थाहा थिएन फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो होइन के गर्ने भएको क्या ल्याङ भइदिएर बल्ल सिक्यो दियोस् गरेपछि सिक्छ नि त त्यही भएर हो अब हेरौँ यहाँ बोर्डिङ कति बजीसम्म बस्नुपर्छ थाहा छैन हाम्रो फ्लाइट चाहिँ 11:40 को हो अब हेरौँ आउँछ है गाइज अब इन्डियाको ब्लग दामी खै के थाहा कहाँ पाउँछ यस्तो अब मस्त आउँदैछन् उताबाट पनि गाइस हामी चाहिँ बसमा अब चल्नु ल ए टर्की एयरलाइन जानु बाई होइन कहिले जानुभएको त्यो पनि अहिले बाई भन्दैछ अब यहाँबाट सिधै हामी प्लेनमा चढ्छ ठुलो प्लेन यो गाडी दिस इज आवर प्लेन है गाइस इन्टरनेसनल ल गाइस बसबाट निस्क्यौँ अब प्लेनमा चढ्नु प्लेनमा नेपाल एयरलाइन्स टिकट अब हेरौँ है त गाइस के हुन्छ नमस्ते सिधै थ्याङ्क यू हस् सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी गराउँदछौँ यहाँको सामान माथिको सामान बक्समा राखिदिनुहोला
दिस टु दिल्ली एयरपोर्ट गाइस हैन इट्स बिङ 1.5 आवर ठ्याक्कै 1 घन्टा 30 मिनट लाग्दो रहेछ नाउ वी आर हेडिङ टु क्याब बुकिङ गर्नुपर्छ है त्यही हिँड्नै पर्दैन सर्नु जान्छ यस्तो बसेको एयरपोर्ट होइन इट्स फन क्याब बवाल छ यु क्यान सी दिल्ली एयरपोर्ट इज टु गुड ल गाइज है हामी चाहिँ ओले बुक गरेर होटेलतर्फ लाग्दैछौँ होइन अघि भर्खर एयरपोर्टबाट झऱ्यो जस रमाइलो छ अहिलेसम्म त अलिक झन्झट भइरह के हुन्छ हेरौँला होइन यस्तै हो रमाइलो यु क्यान सी खतरा दिस इज न्यू दिल्ली गाइज न्यू दिल्ली खतरा छ रोड है बवाल छ यहाँबाट होटेलमा बस्छौँ फ्रेस फ्रेस हुन्छौँ होइन एकछिन प्लेनमा बसेर अलिक गाह्रो भयो क्या त्यही भएर दाइ यहाँ एकजना साथी अगाडि छ हामीले रमाइलो छ गाइस रमाइलो दिस इज कल रमाइलो ब्यागहरू लगेजहरू यहीँ छ होइन फ्रेस हुन्छौँ खासहरू खान्छौँ एकछिन डुल्छौँ है त डुलेको भिडियो हाल्छु होला दिस इन्टरनेसनल ट्रिप फर्स्ट ट्रिप मेरो आयो होइन नेपाल में पठाओ पठाओ अनि के टोटल है नेपाल पे हमारा बाइक टैक्सी सब कुछ होता है सर क्या होता क्या होता है है बाइक टैक्सी हाँ ऑटो हाँ लग्जरी गाड़ी लग्जरी गाड़ी भी होता है मर्सिडीज ठीक है रिक्शा भी होता है दिस ऑटो नाइस ऑटो है हामी त इन्टरनेसनल टुर हो नि नेसनल टुर होइन फर्स्ट इन्टरनेसनल ब्लग आउँछ केटिएम टु दिल्ली भनेर है पिस आउट सही है नेपाल पहले इंडिया में ही था नेपाल पहले इंडिया में था नेपाल ना क्यों नहीं था इंडिया में नेपाल इंडिया के हिस्सा में इंडिया ने ले लिया ना हमारा काला पानी नेपाल का था ना काला पानी नेपाल पे कभी किसने राज नहीं किया हाँ राज तो नहीं किया नेपाल में राज नहीं किया किसी ने नहीं और आप बोलते हैं इंडिया नेपाल का है के भनेको है कैसे हो गए जब नेपाल था वो तब इंडिया नहीं था नहीं था जब नेपाल के भनेको सब बिग्रे के भनेको सारी मैप तब इंडिया नहीं था हाँ पता हो आपको भी स्टोरी पता होगा ना के गर्दा खाड़ो नेपाल के जनता के सामने आप कह रहे हो इंडिया नेपाल का है भनेर इंडिया के हिस्सा में से कटा हुआ है नेपाल ए नेपाल इंडिया का है भनेर जो राज्य अभी विवाद में है ना वो पहले नेपाल के मैप में जो था ना पहले वही था तब इंडिया था ही नहीं हाँ इंडिया था नहीं मैप में नेपाल गोर्खाली देश का है यस्तो भनिन्छ गाइज हेर न नेपाल हाम्रो होइन इन्डियाको अरे हेर गाइज कमेन्ट डाउन बिलो अब कहाँ से आ गया इंडिया पहले ये क्या था कमेन्ट डाउन बिलो है गाइज नेपाल इन्डियाको हो कि कहाँको सिधै इन्डियाको अरे ल इंडिया का नहीं तो यो के थाहा मुझेहरूलाई होइन यस्तो सिक्नेहरू सरी ल कैसे होता है आधार का नोट नेपाल का देखिए इधर इंडिया में जाने में बंद हो गया हाँ बंद 2000 का चलेगा इधर ऐसा होता है 500 का नोट 500 का नोट छोटा होता है इधर ऐसा होता है 500 का नोट कैसा लगा तुमको इंडियन नेपाली नोट बोलो ना तुमको इंडियन कह रहे नेपाली का पैसा कैसा लगा बेकार इस गौर से देखे इस चेहरे को नेपाल को बहुत खत्म कर रहा है वो चेहरा उसी बंद किए थे
हिन्दी बोल्न आउँदैन त्यही हो नि गाई जस्तै हो बेकार रे होइन हामी चाहिँ बम्बे चल्दैछ बम्बे भने जस्तो हो नि गाई होइन कस्तो हेर न गाई नेपालको नोट खत्तम रे ल गाह्रो छ भने ल यो दाइले क्या हेरिदिएर ओ यहाँतिर बस पनि खतरा छ गाई खतरा अब यहाँबाट जस्ट 5 किलोमिटर होला सब यहाँबाट हेर्नुपर्छ क्या सब लोकेसन हेर्नुपर्छ कि यिनीहरूले नठाउनु सक्छ क्या यिनीहरूले एउटै ठाउँ घुमाएर त्यो गर्न सक्छ लोकेसन आफू पनि हेर्ने होइन पक्क हुन्छ यहाँतिर त डाटा यति सस्तो छ नि यति सस्तो छ कति रुपियाँमा मैले होइन 30 दिनको लागि डेली प्याकेज 2 GB अनि अनलिमिटेड कल अनि 100 कि 200 SMS छ क्या ला सस्तो क्या डाटा त यहाँ 150 रुपये Kalau